देखिए थर्ड फेज की शुरुआत ही होती है रिफॉर्म्स. सो इंडिया वेंट फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी रिफॉर्म्स आपके दो किस्म के रिफॉर्म्स है. इमीडिएटली इंडिया को जो क्राइसिस था उसको ठीक करना था. तो इमीडिएट क्राइसिस को ठीक करने के लिए वी हैड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जिसमें आपने शॉर्ट टर्म में जो क्राइसिस है उसको मिटिगेट करना है. एंड सेकेंडली यू हैड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स, इसमें वी हैव टू चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. तो शॉर्ट टर्म में it was to stabilize the macroeconomic situation of the country. और यहाँ पर to change the basic framework, to change the basic framework of economic policies. यहाँ पर आपको पूरा पॉलिसी बदलना पड़ेगा. Change the economic framework of, change the basic framework of economic policies. Now, what did we do in macroeconomic stabilization? Macroeconomic stabilization. सबसे पहले stabilize करना है. So immediately you have to bring down the inflation. To bring down the inflation, government was told to bring down fiscal deficit. So fiscal deficit को कम करना है by reducing the expenditure and increasing the revenue. At that time, it was considered that fiscal deficit should not be more than 4%. Should not be more than 4%. ठीक है? So when fiscal deficit will fall, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट खत्म हो जाएगा. इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा. इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा. सेकंड, डिवैल्यूएशन. तो इंडिया ने डिवैल्यूएशन करा. फ्रॉम 18 रुपीज का $1 था उसको चेंज किया 24 में. सो इट डिवैल्यूड द करेंसी. इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट बाय इंक्रीजिंग फॉरेक्स. तो इससे फॉरेक्स भी बढ़ने लगा. तो शॉर्ट टर्म क्राइसिस was mitigated. Then we have the long-term structural adjustment reforms. Structural adjustment reforms. इसमें what do we have to do? Change the basic framework of policies. सबसे पहले industrial sector reform. Industrial sector में we change the policies. हमारे पास policy कौन सा था पहले? Industrial Policy Resolution 1956 was changed to New Industrial Policy 1991, wherein what did we do? Abolition of licensing. क्या मैं कह सकता हूँ? When you abolish licensing, you are liberalizing your policy. It was a step towards liberalization. Export promotion. Export promotion. So it was outward oriented policy. Step towards globalization, and many industries were set up to private sector. Many industries opened up for private sector, a step towards privatization. Then we have fiscal reforms. Fiscal reforms. Fiscal किसके related होता है? Related to government expenditure and revenue. तो अभी तक हम क्या करते थे? When the government had to borrow, they would directly go to RBI. RBI को कहते थे give us the borrowing. ठीक है ना? So we reduced the borrowing from RBI. पहला काम, reduced borrowing from RBI. We did not print to give money to the government. Printing बंद हो गया. Increased revenue through disinvestment and privatization. Fiscal deficit to be maintained at 3.5% of GDP. Increased taxes. Increased taxes. इसके लिए गवर्नमेंट अपॉइंटेड टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी नोन एज चिलैया कमेटी. चिलैया कमेटी. इन्होंने हमें बताया कि टैक्स कैसे बढ़ाना है. तो दीज आर योर फिस्कल रिफॉर्म्स. देन वी हैव फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन. इन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट्स शुड बी लिबरलाइज्ड. रिमेंबर दैट इंटरेस्ट रेट्स, deregulation of interest rates, जिसमें interest rates were first decided by the government. Then we told them the base rate पर spread लगाओ, फिर MCLR पे spread लगाओ. These were different interest rates were
liberalized. Reserve ratios were reduced. Reserve ratios, CRR, SLR was reduced, decreased. Private participation को बढ़ाया गया. Then we have external sector reforms. India shifted from fixed to managed floating. India focused on export promotion, step towards globalization, allowing more FDI and FPI, foreign investment reforms. Now, this was the backdrop of 8th 5-year plan. Write down 8th 5-year plan. 8th 5-year plan was a remarkable success where GDP growth rate touched 6.8%. By 1996, industries achieved 13% growth rate. India achieved lower twin deficits. But the only criticism about the reforms was that the growth did not create employment, hence jobless growth. Therefore, in 1993, government launched Pradhan Mantri Rozgar Yojana. Pradhan Mantri Rozgar Yojana.